Hi students, good morning. And today we are going to finally complete the chapter which is named as Applications of Trigonometry. These problems are some of the so-called hard problems, but actually they are not hard, as I told you that you just only need to draw the figure and I'm sure that you will be able to complete this part. So this will be the lecture number 4 on, I guess, application of trigonometry, or I guess as its third, I don't know. So whatever is the part, guys, succeed. So I have written around 5 questions on the board. Let's start solving these. So first question, the angle of elevation. एलिवेशन का मतलब कि क्वेश्चन के अंदर कोई एक बंदा नीचे खड़ा हुआ है और वो ऊपर के तरफ में देख रहा है. सो दैट मींस ही इज लुकिंग अपवर्ड्स एंड दैट्स द रीजन व्हाई द वर्ड इज एंगल ऑफ एलिवेशन. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. ओके, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज. सो दे आर सेइंग कि यदि मैं टावर के फुट से, यदि मैं बिल्डिंग के टॉप को देखता हूं तो एंगल कितना बनता है? 30 डिग्रीज. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्रीज. यदि मैं बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखता हूं देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्रीज. ओके, इफ द टावर इज 60 मीटर्स हाई, टावर जो है वो 60 मीटर्स कितना है? हाई है. Find the height of the building. Now you need to find out the height of the building. Right now currently it's very difficult to say which one is bigger, which one is smaller. So let's try and understand the question once again. So पहले तो figure बनाते हैं. So what they have said is find the height of the building. So we don't know what is the height of the building. So I'm just randomly making the figure. So let's make a first question. Okay, so let us say suppose there is this particular building. So this is the building. Okay, let's mark it as A and B, and this is given to you if the tower is 60 meters high. So let us say suppose ये AB is the tower and this tower is 60 meters high. Correct? Okay, so this is the tower which is 60 meters high. Now they have said the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees. So let us say suppose there is this particular building, something like this. I don't know what is the height right now, so I've just made a building a bit more shorter considering that tower is a bit more lengthier. I don't know. As soon as we are going to read the question, we will see whether the figure is wrong or right. The angle of elevation of the top of the building, so let's mark this building as P and Q. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees. यदि मैंने यहाँ से इसको देखा, ये ग्राउंड है जहां पर दोनों के दोनों टावर और बिल्डिंग लगे हुए हैं आपके. ओके, सो दिस इज दैट AP. सो इफ फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्रीज. 30 degrees. Okay, so angle QAP equals to 30 degrees. The angle of elevation of the top of the tower, the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degrees. यदि बिल्डिंग के फुट से, यदि मैंने टावर के टॉप को देखा तो एंगल कितना जाता है? 60 डिग्रीज. राइट, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज 60 डिग्रीज. तो पहले यहां पर लिख देते हैं दैट इज एंगल QAP equals to 30 degrees and also angle APB. Angle APB should be equals to what? That is 60 degrees. ये भी हो गया. अब आगे देखते हैं. If the tower is 60 meter high, so this particular part is 60 meter high. Okay, fine. Find the height of the building. Now I need to find out the height of the building, that is PQ. So यहाँ पर लिख देता हूँ. PQ is equals to height of the building. Height of building. And it should be equals to say H meters. HM नहीं है ये, ध्यान रखना. This is H. अभी के लिए H मान लेते हैं. So this particular part is H. Now what would you do? Now let's see the triangle. कौन सा वाला आपको देखा के रखा है? आपको ये वाली साइड का 60 देखा के रखा है. So let's take triangle ABP. Okay. So
in triangle ABP or APB, in triangle APB, which is right angled at where? At this particular part, right? Now if this is a triangle APB, then angle APB should be equals to what? 60 degrees. Angle APB equals to 60 degrees, right? Then अभी मैंने यहां पर देखना स्टार्ट करा, so let's take the formula of tan 60. Now why? Tan 60 degrees should be equals to tan 60 perpendicular upon hypotenuse. So tan 60 is perpendicular. Perpendicular is this. That means 60 के opposite side is this. So it will be tan 60 should be equals to AB upon adjacent side. Adjacent side मतलब base. This is the base, which is the AP. So AB की वैल्यू कितनी है? 60 meters. AP की वैल्यू कितनी है? Which we don't know. What is tan 60? It is √3. So √3 should be equals to 60 upon AP, or AP should be equals to 60 upon √3. So AP should be equals to 60 upon √3 meters. अभी इसको सॉल्व नहीं करते because इन्होंने आपसे क्या बोला है? Find the height of the building. So this is not what we need to solve right now. So we are least bothered about what is AP. Okay. Now we need to find out what is QP. Now let's take triangle APQ over here. So यहाँ पर आ जाएगा in triangle APQ. In triangle APQ में angle QAP is given to you as 30 degrees. So we will write angle QAP equals to 30 degrees, right? So अब वापस से tan 30. Now tan theta मैं क्यों लगाऊंगा? खुद सोचो. Tan 30 should be equals to opposite, that means perpendicular upon base, or opposite side upon base. So that means that it should be equals to, that is PQ upon AP. PQ, has it been given to you? No. आपने H माना हुआ है. What is AP? AP is 60 by √3. 60 by √3, so √3 will go at the top, right? What is the value of tan 30? Tan 30 is 1 upon √3 should be equals to H √3 upon 60. Cross multiplication. So √3 will go over here and 60 will go over there, or H should be equals to, that is 60 upon √3 into √3 is 3. Because ये से multiply होगा, so √3 into √3 will become 3. 3 times 1, 3 times 20. So H should be equals to 20 meters. And that's all is the answer. So what is the answer? So you are going to write, so the height of the building is 20 meters while the height of the tower is 60 meters. कभी कभी CBSE ने क्वेश्चन पूछ लिया, no, tell us the distance between the foot and the height of the tower. It's 60 upon √3. या आप चाहो तो rationalize भी कर सकते हो. 60 √3 upon 3, that is 20 √3. 3. Correct? So आपको solve करना है, solve कर देना, आंसर आ जाएगा. Let's move on to the next question, guys. So what is the next question? The angle of depression. Angle of depression means what? Depression का मतलब हो गया that कोई ऊपर से नीचे देख रहा है. Because elevation means from the top to the bottom. While depression means from the top to the bottom, while elevation means from the bottom to the top. Okay, so I moved up over there. So question number second पर आते हैं. So question number second goes something like this. It says the angle of depression from the top of a tower of a point A on the ground is 30 degrees. इन्होंने बोला यदि आप टॉवर के टॉप पे खड़े हुए हो, फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है ए, यदि मैं टॉवर के टॉप से उसको देखता हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा? 30 डिग्रीज. ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 20 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टॉवर, द पॉइंट इज the point B, the angle of elevation of the top of a tower from the point B is 60 degrees. उन्होंने बोला अब जब वो आदमी यहाँ A पॉइंट पे खड़ा हुआ है, अभी उसने देखा या ऊपर से किसी ने देखा, so the angle of depression was 30 degrees.
But when this guy actually moved towards the tower, let's say suppose this particular wall is the tower, of course, which you won't be able to see. So if I am moving towards it, so I need to make my face go like this. That means the angle of elevation will increase, right? तो वो बोल रहे हैं तब जाके वो एंगल कितना होता है 60 डिग्रीज का. Now they are saying find the height of the tower and the distance from the point A. So let's make the figure first of all. So the figure goes like this. The angle of depression. So there is this tower which I made. The angle of depression from the top of a tower of a point A on the ground is 30 degrees. Let's make a point A on the ground. So this is the point A on the ground. This is the tower PQ. आप कुछ भी मान सकते हो. A on the ground is 30 degrees. So this particular point is what? That is 30 degrees. This is the line of sight. आपको मालूम है एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं? जो लाइन ऑफ साइट के बाद में बनता है. So if this is 30 degrees, let's mark this as point say M. So if this is 30 degrees, angle MQA is 30 degrees. That means according to that geometry, alternate interior angle this will also be 30 degrees. Correct? Because ये line और ये line तो parallel है. Because this is on ground and this is the horizontal ray. So that means the angle of depression is 30 degrees. पहला केस तो हो गया. Now they are saying on moving a distance 20 meters from the point A towards the foot of the tower at the point B. यदि मैं A point से B point के तरफ में करीबन 20 meters चलता हूं, I don't know ये कितना distance है, but इन्होंने मुझे दे के रखा हुआ है इट इज 20 मीटर्स. तो मैं A से यदि मैं 20 मीटर्स डिस्टेंस कवर करता हूं एंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब की बार ये आदमी नीचे से टावर को देख रहे हैं. सो इफ ही इज वॉचिंग द टावर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेस और फ्रॉम द ग्राउंड, देन इट इज फाउंड टू बी दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन गोज फॉर 60 डिग्रीज. दैट मीन्स दिस goes for what? That is 60 degrees. Let's mark this. अच्छा ये अपन ने already mark किया हुआ है. That is the point B. So that means angle PBQ equals to 30 degrees. So let's write. Given angle PAQ equals to 30 degrees, which should be equals to angle MQA. Correct? This is given to you. Also, angle QBP लिख देते हैं. QBP equals to 60 degrees. That is also given to you. And the distance AB is 20 meters. Now they are asking you find the height of the tower. So what is the height of the tower? I don't know. तो यहां पर लिखते हैं height of the tower. Height of tower, that is PQ, should be equals to what? That is कितना दिया हुआ है वो तो फाइंड करना है. So let us say suppose मैंने उसको h meters मान लिया. Okay, so this is your h, which is the height, which I don't know what exactly is this. Now they are saying find the height of the tower and its distance from the point A. And its distance from the point A. So इन्होंने बोला है A point से उस part P point का distance कितना हो जाएगा. Find the height of the tower and its distance from the point A. So you need to see from this to this. Now I don't know what is this distance BP. So let us say suppose X, because we don't know. Okay, so यहाँ पर लिख देते हैं that is BP should be equals to X. दोनों ही मीटर्स में, H भी मीटर्स में, X भी मीटर्स में. अब क्या करोगे? सबसे पहले टेक दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल QPA ले लेते हैं. सॉरी. ओके, सो इन ट्रायंगल QPA, द बिगर ट्रायंगल, द बिगर वन. सो इन ट्रायंगल QPA क्या हो जाएगा? कौन सा एंगल है आपके पास में इन ट्रायंगल QPA में? दिस इज दिस एंगल. सो यहां पर लिखोगे एंगल PAQ
angle PAQ equals to 30 degrees. So once again, tan 30 degrees, tan 30 के opposite side कौन सा हो जाएगा? Means perpendicular, that is H upon what is the base? Base is AP. So यहाँ पर लिख देता हूं मैं AP और H के जगह पर भी लिख देते हैं अपन PQ. Correct? So what is PQ? It should be equals to H. What is AP? It should be equals to 20 plus X. Right. What is now tan 30? Tan 30 की वैल्यू होती है 1 upon root 3. It should be equals to H upon 20 plus X. और cross multiplying, और root 3H should be equals to 20 plus X. करेक्ट? तो ये भी आ चुका मेरे पास में, और x should be equals to root 3h minus 20, and this is also done. Now what would you do? ये तो आपके पास में केवल x की वैल्यू आ गई है, बट हमें तो हाइट भी फाइंड करनी है. Now let's take the smaller triangle. और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है. आप पहले इस ट्रायंगल को ले सकते हो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालो और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे, तब भी सेम आंसर आएगा. सो इन ट्रायंगल QPB और इन ट्रायंगल BPQ, दैट इज एंगल PBQ, QBP, एंगल QBP should be equals to what? That is 60 degrees. ये भी हो गया. नाउ इस ट्राइंगल के अंदर फिर से tan 60 degrees should be equal to perpendicular upon base, that is PQ upon PB, PQ upon PB, right? So what is now tan 60? Tan 60 की वैल्यू हो जाएगी root 3 should be equals to, what is PQ? PQ is H, and what is your PB? PB is X. यही होगा. Now can I put x के जगह पर this particular value? So let's put, it should be equals to, नीचे लिख देते हैं, that is root 3 should be equals to h upon, x के जगह पर आ जाएगा root 3h minus 20, right? Let's do the cross multiplication. Or so root 3h into root 3 is 3h minus 20 into root 3 is minus 20 root 3 should be equals to what? H. Let's solve this. Or 3h minus h is 2h should be equals to 20 root 3, or h should be equals to 20 root 3 upon 2, right? 2 times 1, 2 times 10, or it should be equals to 10 root 3. But what is 10 root 3? Root 3 is 1.732. So let's take 10 into 1.732. So h should be equals to 10 into 1.732 is 17.32 meters. आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो. But if in the examination, if the part is given to you that root 3 is 1.732, then you have to take this value. So that means that h should be equals to 1.732 meters, and that's all it's done. But is that done? No. That's where the overconfident guys actually would lose the marks. Why? Please understand, आपने h तो निकाल दिया, which is 10 root 3. But they have also asked you to find out the distance, total distance AP. So कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं. Okay. So AP should be equals to 20 plus x, क्योंकि उन्होंने पूछा है टॉवर से कितने डिस्टेंस से पॉइंट A है. So AP should be equals to 20 plus x के जगह पर let's put this value, and this value is what? That is root 3h minus 20, or AP should be equals to 20 plus in bracket root 3 into h. What is h? H was 10 root 3.
So 10 root 3 into root 3, 10 into 3 is 30 minus 20. So AP should be equals to 20 plus 30 minus 20 is 10. So AP should be equals to 30 meters. If you haven't understood that ये कैसे आया, प्लीज अंडरस्टैंड मैंने कुछ नहीं किया है, केवल ये 10 रूट 3 जो h की वैल्यू आया था उसको मैंने यहाँ पुट किया. सो 10 रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 10 into 3 is 30, 30 minus 20 is 10, and that's all the answer. Let's move on to the next question now. So the question was currently second. Now let's move on to the question number third. Now what is being given in question number third is the angle of elevation of the top of the tower, okay, from 2 points, that is at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower, and in the same straight line with it are complementary. Now comes some revision of class 9th. What do you mean by the word complementary angles? Complementary angles are those angles in which the sum of the angles should be equals to 90 degrees. That means angle A plus angle B should be equals to 90 degrees. What they are saying is angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meters and 9 meters from the base of the tower. So let's see. So question number is third. So they are saying the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 and 9 from the base of the tower. Okay. So let's say suppose there is this particular base. Okay. यहाँ बना लेते हैं. So let us say suppose this is the base of the tower. Okay, ये रहा base आपके पास में. As usual, let's mark it as AB, P, Q, L, M, N, Z, M, N, जो मर्जी है मानो. AB from 2 points at a distance of 4 meters and 9 meters from the base of the tower, and in the same straight line with it are complementary. एक point है यहाँ से यहाँ पर कितने की दूरी पर? 4 मीटर. And another point from the base, because इन्होंने बोला है from 2 points at a distance of 4 meters and 9 meter. So एक तो 4 मीटर है और दूसरा बेस से ही कितनी दूरी पर है? 9 meters के. So this part is total of 9 meters. So this is say point B, this is the point C. Now common sense of this entire part is 9 and this is 4, that means this particular part must be what? 5 meters. कैसे आया? 9 पूरा distance है, 4 meters इतना है, तो ये कितना होगा? 9 minus 4 is 5. Let's join these. I don't know what's the angle. Let's mark it like this. And I don't know what is this angle also. Okay. इन्होंने आपको बोला है the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meters and 9 meters from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Show that the height of the tower is 6 meters. Now since इन्होंने दे के रखा है कि the height of the tower is 6, तो अपने को भी मालूम पड़ जाएगा कि हमने लैंग्वेज गलत पढ़ी है या सही पढ़ी है. यदि आंसर AB का 6 आ जाएगा तो हमारा आंसर सही है, नहीं आएगा तो नहीं होगा. ओके. So in triangle, अच्छा A B मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, so इसको कुछ और मार्क कर लेते हैं, से D. Okay. In triangle A B D, ABD is a right angle triangle at angle A, correct? In triangle ABD, so इसको मैंने मार्क कर दिया है थीटा, इसको मैंने मार्क कर दिया एज, इसको एंगल को मार्क कर देते हैं विद द पार्ट x और इसको मार्क कर देते हैं विद द पार्ट y. ओके. इन ट्रायंगल ABD tan x should be equals to, मैंने थीटा क्यों नहीं लिया क्योंकि यहाँ थीटा ले लूंगा तो यहाँ पर फिर थीटा 1 थीटा 2 लेना पड़ेगा, तो x and y. So tan x should be equals to, that is AD perpendicular, that is opposite side, upon the base which is AB. So what is AD? AD is AD, I don't know, which is the height. And what is AB? AB is 4.
So tan x should be equals to AD upon 4. Let this be equation number what? 1. Correct? And also it is given, तो अपन यहीं पर ही लिख देते हैं, given angle ABD equals to x, angle ACD equals to y, and also x plus y equals to 90 degrees because they are complementary in nature. Correct? So यहाँ पर आ चुका है tan x should be equals to AD upon 4. अब सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं. इन ट्रायंगल ACD, the bigger triangle, once again angle है 90 degrees का है. So tan y should be equals to AD upon 9. That is also given to you. So tan y should be equals to AD upon 9, which is your equation number what? Second. यहां से यदि आप देखोगे तो you can find out or AD should be equals to 4 times of tan x. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो करेक्ट. अरे आप ही ने तो बोला था ना. So AD should be equals to 4 times of tan x, but actually में उसको करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने AD की जगह वैल्यू भी पुट किया. So let us not do this. Okay, so मेरे पास में ये आ चुका है इक्वेशन नंबर 1, ये आ चुका है इक्वेशन नंबर 2. I also know that x plus y equals to 90 degrees. So can I write it like this? Or y should be equals to 90 minus x. x plus y equals to 90. तो y should be equals to 90 minus x. Of course कर सकता हूं. Let's put down the value over here. और tan y के जगह पर 90 minus x should be equals to AD upon 9. Right? AD is the height. That's what you need to find. So tan 90 minus theta. What do you think the formula is? Tan 90 minus x कितना होता है? That is simple. Tan 90 minus x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 90 का फंक्शन यदि सॉल्व करूंगा तो इट इज व्हाट? cot. So आंसर आ जाएगा cot x because tan will always convert into cot. So tan 90 minus x should be equals to cot x. If you don't know how did this come, then you need to see the video in trigonometry of complementary functions. So tan 90 minus x formula होता है cot x. It should be equals to AD upon 9. Right? क्या मैं cot x की जगह इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 upon tan x should be equals to AD upon 9 because cot का तो मतलब 1 upon tan ही होता है. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और tan x should be equals to that is 9 upon AD. कैसे? tan x यहां पर जाएगा, AD यहां पर आ जाएगा, 9 यहां पर जाएगा. So tan x should be equals to 9 upon AD and let it be equation number 3. Any problem? Now मैं ऐसे पूछ रहा हूँ एनी प्रॉब्लम जैसे आप लोग बड़ा मोबाइल में से बाहर निकल के बताने वाले हो कि बड़ी प्रॉब्लम है. खैर, बट इफ यू डू हैव प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन क्लैरिफाई इट आउट. सो अभी आपने बोला tan x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन AD, बट पहले तो इक्वेशन नंबर 1 में बोला था कि tan x इज इक्वल्स टू AD अपॉन 4. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड यहां पर था tan x AD अपॉन 4. AD अपॉन 4 एंड अभी जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 था वो आपने बोला 9 अपॉन AD. यही बोला है. लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और AD स्क्वायर इट शुड बी इक्वल्स टू 9 into 4 is 36 और AD शुड बी इक्वल्स टू plus minus 6 meters. So AD is what? That is plus minus 6 meters and that's all it is done. इसका मतलब AD की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 6. What did they ask you?
prove that the tower of the height is 6 meters, and that's all. It's being proven. I'm just getting a slide. If you want to take a snapshot, you can. Okay. Now, without wasting time, let's move on to the question number 4, and then the last question, and then this chapter end up, and then we are going to start a lesson of bio and economics, of course. Okay, so moving on to question number 4 now. The angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degrees. Okay, वही सेम क्वेश्चन है टाइप का. एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है X, आपने टावर PQ, P बेस है उसका, Q हाइट है, आपने Q को यदि एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो एंगल कितना आता है 60. At a point Y which is 40 meters vertically, the angle of elevation is 45 degrees. Now they are saying the angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degrees. At a point Y, 40 meter vertically, the angle of elevation is 45 degrees. उस X पॉइंट से यदि मैं और ऊपर चढ़ करके 40 मीटर्स ऊपर चढ़ करके यदि और देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू व्हाट? 45 डिग्रीज. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 4 गोज लाइक दिस. सो सबसे पहले तो मुझे एक टावर बनाना पड़ेगा PQ. सो लेट्स मेक दिस टावर. ओके, so let us say suppose ये है वो टावर P and this is that part Q. Okay, now इन्होंने बोला है the angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degrees. Okay, so ये रहा वो पॉइंट जहां से ही आपने एंगल मेजर किया है and this angle is 60 degrees. Okay, now at a point Y 40 मीटर, ये पॉइंट X था, at a point Y 40 मीटर वर्टिकली, वर्टिकली मतलब स्ट्रेट ऊपर, तो यहां से ये रहा वो पॉइंट. ओके, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, से M नाम दे दिया, एंड दिस इज 40 मीटर्स. नाउ दे आर सेइंग द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज. यहां से अब यदि आपने इस पॉइंट Q को मेजर किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्रीज. बट द पॉइंट इज, सर अब मैं बनाऊंगा कहां पर? जिस जगह पर भी आपका M पॉइंट है, PX के पैरेलल एक लाइन को कंस्ट्रक्ट कर दो. लेट्स ड्रॉ दिस कंस्ट्रक्शन. ओके, लेट्स मार्क दिस एज N. सो मैंने यहां पर बना दिया construct MN parallel to PX. सॉरी. ओके, नाउ कितना देके रखा हुआ है आपको? गिवन एंगल QMN, ये जो आपको एंगल दिया हुआ है दैट इज 45 डिग्रीज एंड दिस इज 60 डिग्रीज. राइट, सो लेट्स सी दिस. गिवन एंगल QMN should be equals to 45 degrees, right? Also angle PXQ should be equals to 60 degrees, right? जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज फाइंड टू राइट एंगल ट्राइंगल्स. नाउ व्हिच आर दोस टू राइट एंगल ट्राइंगल्स? एक राइट एंगल ट्राइंगल तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, दैट इज PXQ, and another right angle triangle which I can see is NMQ. PXQ and MNQ. और कोई right angle triangle नहीं है, केवल यही दो हैं. So let's see. Let us suppose PX is what? मैंने इसको मान लिया say X meters. Right? If PX is X और यदि NM parallel है, इसका मतलब this particular part also will be X. If mx is equals to 40, तो यहां पर लिख देते हैं if mx is equals to pn, क्योंकि pn भी पैरेललोग्राम बन रहा है, so mx equals to pn equals to 40, correct? 40 meters.
What is then Qn? We don't know. Now what do we need to find it out? We need to find it out. Find the height of the top of PQ. So Pn तो है मेरे पास में, which is what? Which is 40. NQ नहीं मालूम, so NQ को मान लेते हैं H. Let Qn should be equals to, या Qn को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं मानते. ओके, आगे बढ़ते हैं. In triangle QNM, in triangle QNM, QNM में क्या हो जाएगा? सबसे पहले tan 45. Tan 45 degree should be equals to perpendicular, which is Qn, upon base, which is x. Right? Tan 45 की वैल्यू फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है 1. It should be equals to Qn upon x, और x should be equals to Qn. इसका मतलब x और Qn की हाइट क्या है? सेम टू सेम. x is equals to Qn आ चुका है, नो प्रॉब्लम. अब बढ़ते हैं सेकेंड ट्राइंगल की तरफ में, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है. सो लेट्स टेक इन ट्राइंगल QPX. QPX क्या हो जाएगा? tan 60 degrees should be equals to, and that is perpendicular. So what is perpendicular? It should be 40 plus Qn. So पहले मैं मार्क कर देता हूं इसको as PQ upon base. Base is what? PX, which is x. अब PX लिख सकते हो. PQ की जगह पर क्या लिख देता हूं? That is 40 plus Qn. क्यों? Because Pn is 40 and Qn is Qn. 40 plus Qn whole upon x. Qn की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 40 plus x upon x. Right? What is the value of tan 60? Tan 60 is root 3 should be equals to 40 plus x upon x, or root 3x should be equals to 40 plus x. Correct? Or root 3x minus x should be equals to what? 40. x कॉमन निकालूंगा तो अंदर आ जाएगा root 3 minus 1. It should be equals to 40. और x should be equals to, क्योंकि x ही Qn भी है, ध्यान रखना. So x should be equals to 40 upon root 3 minus 1. जब भी कभी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है, यू नो वी डोंट लाइक द स्क्वायर रूट्स टू मच इन द डिनोमिनेटर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू द रैशनलाइजेशन. सो इनटू root 3 plus 1 upon root 3 plus 1. It should be equals to 40 times bracket root 3 plus 1. A square minus b square is a minus b into a plus b. So root 3 का square will become 3 minus 1 का square will become 1. So it should be 40 bracket root 3 plus 1, or it should be equals to 2. 20 times. So answer कितना हो जाएगा? X should be equals to 20 bracket root 3 plus 1. root 3 plus 1 यही आ गया. और it should be equals to, what is root 3? root 3 is 1.732 because standard value होती है. So यहाँ पर आ गया 20 into in bracket 1.732 plus 1 is 2.732. ये वैल्यू आपको रूट 3 की नॉर्मली एग्जाम में देके रखते हैं, नहीं दिया होगा तो भी आप पुट कर देना. सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? 2 2s are 4, 2 3s times 6, 2 7s are 14, 4 5 5. So answer is 54.64 meters. But this is only what? This is x. What is x? X was Qn. So this is that. So what is the height of PQ? So यहाँ पर लिख देता हूँ. So height of PQ should be equals to 40 plus 54.64, or it should be equals to 94.64 meters. And that's all, that's done.
voila, khatam. Let's move on to the last question. By the time I'll just rub off the board and change the marker. So by the way guys, hopefully you all guys are doing fine. We are just keeping our fingers crossed. Hopefully, let the government now finally give us some relief. Otherwise we all are going to be in a severe condition, guys. Okay. So let's now start doing with last question, that is question number 5. Okay, so what does the question number 5 says? From a point on a bridge across river, the angles of depression of a bank on opposite side of the river are 30 and 45. Okay. If the bridge is at a height of 2.5 meter from the bank. Okay. सबसे पहले guys एक रिवर बनाते हैं, यहां से 2.5 meters ऊपर, something like this. I don't know whether this is the middle point or not because they haven't said. So let's mark the banks as B. Let's mark the another bank of the river as C. Okay. Don't think that this is the middle point. I don't know because the question hasn't mentioned it. Let's just point say N. मैंने M नहीं लिया, otherwise आपको लगेगा कि मैंने middle point ले लिया. इन्होंने बोला है कि आपको देकर के रखा है, this is the point से O मान लेते हैं. They have given this height is 2.5 meters. Okay. Now they are saying depression of a bank on opposite sides of a river are 30 and 45. जब ये एक साइड के बैंक को यहाँ पर यदि कोई आदमी देखता है तो उसको एंगल कितने का दिखेगा? That is 30 degrees का. So let's mark angle of depression as 30 degrees. Since alternate interior angle, so ये भी 30 degrees. जब वो दूसरे साइड के बैंक को देखता है, that means that angle is being shown as 45 degrees. Right? इसका मतलब है कि वो गाइस मिडिल में तो नहीं खड़ा. यदि मिडिल में खड़ा होता तो दोनों के दोनों एंगल्स आपके सेम ही आते, because this and this would have been same. बट जब उसने यहां से देखा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था? 45 degrees का. Please guys remember, you need to mark this line which is the line of sight. Okay. Now let's write the given. So angle angle OBN should be equals to 30 degrees and angle OCN should be equals to 45 degrees. And आपको दे करके रखा हुआ है NO should be equals to 2.5 meters. और आप इसको ON लिख दो. NO थोड़ा नेगेटिव सा वर्ड लगता है. In these negative times, we are not going to use anything negative. Okay, so this is the ON which is equals to 2.5. Now you can see as usual the same trick goes for each question in trigonometry. Find the two right angle triangles. So this is one of the right angle triangle, this is another right angle triangle. What do you need to do? Very simple. In triangle OBN, that is tan 30 degrees should be equals to perpendicular, that is ON, upon base which is BN. ON is 2.5, BN is BN which I don't know, और tan 30 की value is 1 upon root 3 should be equals to 2.5 upon BN, or BN should be equals to 2.5 root 3. Okay, so BN equals to 2.5 root 3 meters. Correct? अब बोलोगे root 3, now you can put down the value 1.732 and can get the answer, so it's your choice. What have they asked you? Find the width of the river. Okay, तो बाद में करते हैं. In triangle, let's take another triangle, that is OCN. Again, tan 45 degrees should be equals to perpendicular, which is ON, upon base or the adjacent side, which is CN.
What is ON now? ON is 2.5. What is CN? We don't know. From trigonometric table values, we could find out that tan 45 is 1. It should be equals to 2.5 upon Cn. Or Cn should be equals to what? 2.5 meters. Now what is the width of the river? The width of the river is this, that is BC. So यहाँ पर आप लिखोगे width of the river, width of river BC should be equals to Cn plus Bn. What is Bn? Bn is 2.5 root 3 plus Cn is 2.5. इसको सॉल्व अभी मत करना, I'll tell you the shortcut trick. So it should be equals to 2.5. मैंने 2.5 को बाहर कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचेगा? That is root 3 plus 1. So it should be equals to 2.5. Root 3 की वैल्यू होती है 1.732 plus 1 is 2.732. And now you can find out the answer. So you don't need to then do the multiplication. फिर उसके बाद में खैर वैसे भी कर सकते थे. Actually this is not even a shortcut trick. What am I talking about? So खैर forget it. Chop हो गया मेरा. So 2.5 root 3 plus multiply कर लेना guys. हम कर लेना. And by the way करने के बाद में do tell me that what is the answer over here. So with this particular question, the width of the river is found out, and also this so-called dreadly ganda sa chapter. But this is not ganda, this is an interesting chapter. So this chapter is finally now being ended up. Thank you so much guys for watching this particular video. If you do like guys, make a thumbs up. If you don't like it, do whatever guys you feel like doing. Chill. So, see ya. Bye.